Yes, good afternoon all. Switch on your camera. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Need to switch on your camera, everyone. Jyoti Kumari, Satyam, Ritik. Good afternoon. Mira. Shweta, Arvind, switch on as soon as possible. So let's start now. Where were we? We had to start SFC today. Yes. Write down SFC, State Finance Corporation. फटाफट सारा इंस्टीट्यूशन खत्म कर दीजिए, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे अपना सेंट्रल और कमर्शियल बैंक वो डिस्कशन करेंगे. इसमें जस्ट थियोरेटिकल पार्ट है, जस्ट आपको डिटेल पता होना चाहिए, हिस्ट्री क्या है, काम क्या है, दैट्स इट. ठीक है. एसएफसी लिखिए. एसएफसी का फुल फॉर्म स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एसएफसी. Write down the State Finance Corporation Act 1951. Act 1951, ये भी एक्ट के थ्रू ही एक्ट पास होके ही ये इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था. स्टेट 51 has enabled the state government to set up state financial corporation to function as regional development bank. To function as regional development bank. To function as regional development bank. अब तक हमने लिखा SFC, that is State Financial Corporation, और starting line है State Finance Corporation Act 1951 has enabled the state government to set up SFCs to function as regional development bank, right? Comma, making a significant contribution to industrial advancement of their respective state. हर स्टेट में एसएफसी मिलेगा आपको. As name only indicate, State Financial Corporation. Next point, apart from their share capital, the SFC depend for financial resources, देखिएगा, depend for financial resources on repayment of loans and income from investment. Issue of bonds, comma, refinancing of loan from the IDBI and to a limited extent on borrowing from the RBI.
from the RBI, deposits from the public, and occasionally loans from the state. Now write down type of assistance. Number one, granting of loan. Granting, G-R-A-N-T-I-N-G, granting of loan or advances, and subscribing to the debentures of industrial concern. Granting of loans and advances and subscribing to the debenture of industrial concern. Next point, guaranteeing debentures of industrial concern. Second point, guaranteeing loans raised by industrial concerns, in the capital market, or from scheduled bank or state cooperative bank. ठीक है. Next, third point, guaranteeing deferred payment due. Sorry, ma'am. डिफर्ड पेमेंट, जिस पेमेंट को हम पोस्टपोन कर देते हैं उसको हम कहते हैं डिफर्ड पेमेंट. DEFERRED, डिफर्ड पेमेंट. Guaranteeing deferred payment due, due from any industrial concern in connection with its purchase of capital goods within India. Fourth, underwriting the issue of stock, comma, shares, bonds, or debenture. By industrial concern. हो गया. Next point, subscribing to the stocks, comma, bonds, or debenture of an industrial concern out of the funds representing the special class of share. Out of the fund. शुरू से बोल रही हूँ. Subscribing to the stocks, comma, bonds, or debenture of an industrial concern out of the funds representing the special class of share capital subscribed by the state government.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द एसएफसी grant loan mainly for acquisition of fixed asset, like land, building, plant and machinery, next point, sometimes they also provide loan for working capital margin in combination with loans for acquisition of fixed asset. मैम अगेन बोलिएगा। कहां से? कंप्लीट सेंटेंस सुनिए। समटाइम्स दे आल्सो प्रोवाइड लोन फॉर वर्किंग कैपिटल मार्जिन in combination with loans for acquisition of fixed asset. हो गया? Next point लिखिए, SFC are also providing foreign currency loan to small and medium scale industrial units for import of plant and machinery, and or technical know-how ठीक है, यहां तक होगा आपका एसएफसी। डन। अब आपको जानना जरूरी है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में। गिव द टॉपिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तीन आपका आता है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले लिखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। पहले टॉपिक ये जरूर लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में सबसे पहला एलआईसी। ठीक है, उसमें लिखिए consequent to the decision to nationalize the life insurance business, the LIC, that is Life Insurance Corporation of India, was established. ज्योति कुमारी कहां से छूटा? नेशनल से। हाँ ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने लिखा कंसिक्वेंट टू द डिसीजन टू नेशनलाइज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was established in 1956 as a wholly owned corporation of government, of India. In order to carry on the business of
life insurance and deploy the savings to the best advantage of the policyholders and the community as a whole. Community as a whole. हो गया? A large part of the fund of LIC is deployed as loan to assist the development of social overhead like housing, rural electrification, water supply and sewage scheme. However, full stop के बाद लिखिएगा. However, LIC provides substantial assistance to the industrial sector. However, LIC provide substantial assistance to the industrial sector. Again, beside normal investment operation, by way of sell and purchase of securities in stock market and investment in government securities security के बाद securities in stock market and investment in government securities, the corporation has been anticipating with other all India institution in extending direct assistance to industries in form of loan and direct subscription to shares and debenture of industrial concern. Next point, LIC extends resource support to the term lending institution by way of subscription And to the term lending institution by way of subscription to their bonds and thus contributes
thus contributes to industrial financing in an indirect manner. In an indirect manner. The corporation has also helped small and medium industries by granting loans for setting up industrial estate. इतना सफिशिएंट है LIC के लिए. अब नेक्स्ट है आपका GIC, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. LIC में लाइफ इंश्योरेंस के साथ बेसिकली हम लोग डील करते हैं, और GIC आपका जनरल इंश्योरेंस के लिए ही होता है. और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि री इंश्योरेंस का अथॉरिटी किसको दिया गया है, तो इकलौता इंडिया में GIC को ही री इंश्योरेंस का अथॉरिटी दिया गया है. ठीक है, लिखिए टॉपिक GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और उसके अंदर लिखिए एज अ मेंबर ऑफ द कंसोर्टियम, CONSORTIUM of all India financial institution, the General Insurance Corporation of India, and its four subsidiaries, And the General Insurance Corporation of India and its four subsidiaries. GIC के अंदर 4 सब्सिडियरी कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस में डील करती है, और उसका नाम है, ब्रैकेट में लिखिए, द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कॉमा ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल फायर and general insurance company limited, comma national insurance company limited, and New India Assurance Company Limited, provide assistance to industries in the form of loans, comma underwriting and direct subscription to shares and debenture. Placement of short-term deposit. With companies. Next point लिखिए, beside taking right entitlement and underwriting of debenture issues, GIC along with LIC and UTI buy back debenture tendered by, मैम लाइन रिपीट कीजिएगा लास्ट वाला. buys back debentures tendered by individual holders back to companies for encashment.
for encashment after a stipulated period, and thus provides liquidity to such long-term financial asset, अब लास्ट बच रहा है यूटीआई, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में लिखिए। अ पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड was established in 1964. Full stop. The share capital of the UTI was subscribed by the IDBI, comma LIC, comma SBI, and its subsidiary and other scheduled banks and financial institutions. Next point लिखिए, sale of units and other saving scheme. The sale of units and other saving schemes are the main source of fund for the trust. अच्छा, इसका जो एक्ट था वो 63 में बन चुका था। यूटीआई एक्ट 64 में स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन एक्ट 63 में बन चुका था। ठीक है, ऑपरेशनल हुआ ये 1964 में। कहाँ तक लिखे? अच्छा, ऑब्जेक्टिव जानिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूटीआई is to mobilize the savings of the community and channelize them into productive corporate investment. अच्छा, म्यूचुअल फंड वगैरह क्या होता है, ये सब पर थोड़ा आइडिया है कि नहीं आप लोगों को? What is mutual fund? देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल ऑफ मनी है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का शेयर मान लीजिए 1 लाख में दे रहा है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, तो स्मॉल इन्वेस्टर तो उतनी कैपेबल नहीं है कि उतना बड़ा शेयर खरीद पाए। ठीक है, जिनको स्मॉल इन्वेस्टर कहने का मतलब क्या है, जिसको सब ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या होता है कि एक पुल क्रिएट किया जाता है कि जैसे 10,000 आप दीजिए, 10,000 आप दीजिए, इस तरीके से पुल क्रिएट किया जाता है और फिर उस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। फाइन, मतलब छोटा छोटा इन्वेस्टर मिलके एक जगह जो इकट्ठा हो, इसी को करेक्ट, सब मिल करके 1 लाख किए जमा और फिर वो उस कंपनी का शेयर खरीदा गया और फिर जब प्रॉफिट होगा तो अकॉर्डिंगली वो सबको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जितना प्रॉफिट हुआ और जितना सबका इन्वेस्टमेंट था उस अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, या जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतना आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है,
तो pool of money which is created by the investor is basically mutual fund. Fine. तो यूटीआई इसी चीज के लिए बना ही गया है ताकि वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो कंपनी का शेयर या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए, रिस्क ले पाए, क्योंकि शेयर मार्केट जनरली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता। ठीक है, तो अगर जब सब लोग मिल करके अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है और ज्यादा पैसा भी हमारा मतलब समझिए कि नहीं लगता है। ठीक है, तो जो लोग डायरेक्ट शेयर ट्रेडिंग करते हैं, कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड इज लेस रिस्कियर। समझ आया? ठीक है, ठीक है। यस मैम। Yes. यस मैम। यस मैम बोलने में इतना टाइम क्यों लगता है? चलिए अब आगे बढ़िए। ऑब्जेक्टिव लिख लिए। अब ऑब्जेक्टिव पढ़िए, समझ में आएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूटीआई is to mobilize the saving of the community and channelize them into productive corporate investment so as to provide यहीं तक लिखे थे ना? Yes, ma'am. So as to provide for growth and diversification of the economy Full stop. It is at the same time intended to provide the facility for an equity type of investment to the large and growing number of investors in small and medium income group. All right, आगे लिखिए। The UTI mobilizes fund from the public through a number of schemes. Full stop. The saving thus mobilized is channeled into productive activity by the trust by investing them in the shares and debenture in their industry concerned. ठीक है, अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आपका यहाँ खत्म होता है। मैम दे आर इन्वेस्टिंग के बाद क्या बोली? We are investing them in shares and debenture in industrial concern. अरे 1 मिनट 2 मिनट में एंड कर रहे हैं क्लास। अरे भाई ठीक है, आ रहे। डू वन थिंग, विनीता आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पार्टिसिपेंट का। ठीक है, ओके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ले लिए तो बताइए, फिर मैं क्लास एंड करूंगी। अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ले लिए? यस मैम। चलिए, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।